Hello students, I hope you all are well and safe at your home. So let's start today's session. This session for class 3rd, subject science, chapter 4, animals and their food, and we will cover in this session 5th chapter, bird also. As you know very well, all living things need food to live. सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए फूड की आवश्यकता होती है. एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो. एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. Food help them to grow. It gives them energy to do work. It helps them to stay healthy and fit. Food help them to grow. जो फूड है उन्हें ग्रो करने में हेल्प करता है. यह उन्हें वर्क करने के लिए एनर्जी देता है एंड यह उन्हें हेल्दी एंड फिट रहने में हेल्प करता है. यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फूड. On the basis of feeding habits of animals, they can be broadly divided into different groups. एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के मूल रूप में हम उन्हें मोटे तौर पे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्क्रैंचर्स. The group of animals which depend upon green grass. If we talk about herbivores, अगर हम herbivores के बारे में बात करें तो जो group of animals हैं which depend upon green grass or plants for their food are called herbivores. Listen carefully, I am repeating. The group of animals जो अपने फूड के लिए ग्रीन ग्रास या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं. Do you remember which animal are grass eating animals? Yes, they are cow, goat, rabbit, horse, etc. Buffalo, yes, buffalo also. If we talk about their teeth, they have sharp front teeth to bite the grass and swallow it at that time. Means in animals के teeth आगे के शार्प होते हैं जिनकी सहायता से घास आसानी से तोड़ लेते हैं ये. नेक्स्ट इज कार्निवोरस. These animals depend on their animals for their food. Eat the flesh of other animals. Some animals depend होते हैं अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर क्योंकि वह उन एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, वुल्फ, जैकल. दे हैव शार्प, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग pointed teeth to tear the flesh.
इनके टीथ जो हैं शार्प, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड होते हैं, जिससे कि अपना जो फूड है इनका उसको फ्लैश जो है उसको टीयर कर सकें. नाउ थिंक अबाउट omnivorous. The group of animals which eat both plants and the flesh of other animals are called omnivorous. जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, we call them omnivorous. Yes dear students, उनको omnivorous बोलते हैं. Which animal group we have not discussed here? Yes, scavengers. These animals get food from dead and decaying plants or animals. इन एनिमल्स को डेड और सड़ने वाले प्लांट्स या एनिमल्स से भोजन मिलता है. They don't kill animals for their food. अपने भोजन के लिए किसी एनिमल्स को खुद नहीं मारते हैं. Now think about what is proboscis. Proboscis is a long tube for sucking nectar from the flowers. It remains coiled when not in use. Now it's time to discuss about birds. Yes, my dear students, birds are different from other animals because most of them can fly in the air. वह बाकी एनिमल से डिफरेंट क्यों होती हैं? Because they can fly. Yes, my dear students, we have discussed about in previous lecture 3 types of feathers. Down feathers, body feathers, and flight feathers. If we talk about down feathers, यह feathers body को गर्म रखते हैं. And what does it look like? Small and fluffy. Next is body feather. These feather cover the body of a bird, and the next one is flight feather. These feathers help them to fly. Birds move their wings up. We call them upstroke. And down while flying, we call them down stroke. Now we will discuss about beaks of birds. Have you remembered birds have different types of beaks? Why? Because they eat different types of food. पक्षियों के different types के चोंच होते हैं क्योंकि वे different types के भोजन खाते हैं. For example, eagle,
vulture and owl. They have strong sharp and hooked beaks. Sparrow pigeon and hen, they have short strong and pointed beaks, which help them to pick up and crush their food. स्पैरो एंड पिजन हैन, उनके पास छोटी मजबूत और पॉइंटेड बीक्स होती हैं जो उन्हें अपना भोजन लेने और कुचलने में मदद करती हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट क्लास ऑफ बर्ड्स, जैसे हम ह्यूमन अपने हैंड्स एंड लेग को यूज़ करते हैं, सेम एज वैसे ही बर्ड्स अपने क्लास को यूज़ करते हैं. बर्ड यूज देयर क्लॉज जस्ट like we use our hands and legs. Yes, they use their claws to catch and eat food, to move about and to protect themselves from their enemies. And the next topic is nest. Nest means bird's home. You may be thinking, do birds also need a home? Yes, my dear students, birds also need a home because they need a safe place for their young ones. These young ones are very small and not able to take care of themselves. If you talk about tailor birds, the birds swing the leaves together with thread of cotton, wool, etc. Weaver's bird. Weaver birds use dry strips of palm leaves. Do you remember which has the bird that is make nest by pebbles? Yes, my dear students, I am talking about penguins. Why they use pebbles? They use pebbles because they cannot find twigs or leaves, so that's why they collect some pebbles to make their nest. वे टहनियाँ या लीव्स नहीं पा सकते हैं, इसीलिए वे अपना नेस्ट बनाने के लिए कुछ पेबल्स इकट्ठा करते हैं. Why cannot they get twigs and leaves? Because penguins live in cold, freezing place. And the next topic is migration. Migration is a mass movement of animals in response to climate change. Every year some animals and birds move from one place to another place in search of food or to avoid harsh weather conditions or for a breeding purposes. Means एक animals और birds एक ग्रुप में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं. एक इनकी बहुत लंबी जर्नी जो है उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं.
Now, Arctic tern is known as the champion of migration because it flies all the way to South Pole and then return back to North Pole in summer. At the last, I will tell you one more thing. Study of birds is called ornithology, and a person who studies bird is called an ornithologist. Dr. Salim Ali was a famous ornithologist of India. Now write down your homework. In homework you have to learn book exercise and read chapter 4 and 5. Now subscribe this channel if you like my video that this lecture. Goodbye. Thank you.